So today we'll be learning about decimals in mathematics. So what do you mean by decimals? Decimal होता क्या है? You might have heard this word decimal, right? और ये decimal आया कहाँ से? So decimal has originated from a Latin word. Latin word है जिसका नाम है decim, D-E-C-E-M, and it simply means tenth. उसका मीनिंग बस टेंथ होता है, मीन्स 1/10. सो टेंथ, व्हाट डू यू मीन बाय टेंथ नाउ? टेंथ क्या होता है? टेंथ, सपोज आपके पास एक 10 नंबर है. इफ़ यू हैव अ 10 नंबर विथ यू, सो 10 कैसे बने? 10 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वंस, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो व्हेन दिस 10 वंस कम टुगेदर, जब ये 10 वंस एक साथ आते हैं तो ये 10 बनते हैं, राइट? इफ आई टेक 1 फ्रॉम दिस 10, तो हम कैसे लिखेंगे? 1 आउट ऑफ 10 लिखेंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं? टेंथ बोलते हैं. वी कॉल इट एज टेंथ. सो डेसिमल्स, डेसिमल में डेसिम मतलब एक लैटिन वर्ड होता है जहाँ से ये डेसिमल ओरिजिनेट हुआ है, और इसका मीनिंग कुछ नहीं है. मीनिंग मीन्स इट्स सिंपली टेंथ. टेंथ मीन्स 1/10 ऑफ अ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन के 1/10. 10 को अगर हम 10 पीसेस में डिवाइड करेंगे, उसमें से एक पोर्शन लेंगे, सो इट बिकम्स 1/10. देन मूविंग फॉरवर्ड, आप लोगों ने सबने तो प्लेस वैल्यू चार्ट सीखे होंगे, राइट? यू माइट हैव लर्नड प्लेस वैल्यू चार्ट. प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है? अब ये प्लेस वैल्यू चार्ट क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है. इट्स अ प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ डेसिमल्स. क्या है ये? प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ डेसिमल्स. इसमें क्या होता है? नॉर्मल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है कि यू स्टार्ट फ्रॉम वंस, राइट? वंस, देन टेंस, hundreds, then thousands, and so on. So you carry this to the left side. Okay, I'm saying that left side. अब decimal place value chart में क्या होने वाला है कि see, look at this. In decimal place value chart, you are going to have one thing after the ones. Ones के right side पे, going to the right side, you have यहाँ पे decimal point आता है. What do you call it as? Decimal point. And what comes after decimal point? Look at this. Decimal point के बाद क्या आता है? See, this place is called tenth. What do you call it as? 1/10. कुछ नहीं होता, it's 1/10. That means it's 1/10. Then after tenth you have hundredth. हंड्रेड, यहाँ पे टेंथ पे हमने क्या किया? 1 पार्ट ऑफ 10. हंड्रेड पे क्या होगा? 1 पार्ट ऑफ 100. देन यू हैव थाउजेंथ. यू कैन गेस इट, राइट? थाउजेंड पे क्या होगा? अगर टेंथ पे 1/10 है, 100 पे 1/100 है, दैट मीन्स 100 की एक पोर्शन है. देन थाउजेंड पे क्या होगा? 1/1000. ओके, इस पे एक चीज देखिएगा आप लोग, एंड सी, लुक एट दिस लेफ्ट साइड, and I will call this as right side. Okay, right side. So now look at this. What's happening here to the left? To the left देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? डेसिमल से 1 तक कितने पॉइंट्स की कैरी ऑन है? You have 10 points over here. आपने स्केल में देखे होंगे ना, you might have स्केल्स पे देखे होंगे कि in a scale you have points, right? छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, और यहाँ पे अगर 1 है तो 2 होने तक क्या होता है? देयर आर 10 पॉइंट्स इन बिटवीन दैट 10 पॉइंट्स, राइट? सेम वे
यहाँ पॉइंट्स, डेसिमल पॉइंट से लेके 1 तक यू हैव हाउ मेनी पॉइंट्स? यू हैव स्मॉल पॉइंट्स ऑन दिस, okay, and 10 points make this as ones. Similarly from ones to tens, ones to tens तक जाने के लिए भी आपके पास सेम है, you have 10 ones, you should have 10 ones to make it 1 tens. Similarly from here to there you should have what? 10 tens, that means 10 into 10. See, 10 into 10, I'm sorry for this, 10 into 10 makes 100. Now what about here coming to the thousandth? That means 10 times 100, right? 10 times 100 makes it 1000. Same way, now look at here. From here to the right side, if you go to the right side, अगर आप right side जाओगे, जब आप when you are going to the right side जब जाते हैं तो क्या होता है? देखो छोटे हो जाते हैं. सी, या हमने 10 को क्या किया? हमने 10 को हमने 10 पोर्शन में डिवाइड किया, उसमें से 1 लिया है. whereas यहाँ पे क्या हुआ? लेफ्ट साइड में when you went to the left side it got added up, right? but when you go to the right side it is getting divided, means उसको parts पे बन जाता है. it is becoming into different small parts. See, look at here, 1/10. 1/10 मतलब कितना हुआ? 10 times lesser of, that means 1 part of a 10. And then again when you're coming to the 100th place, what happens here? See, फिर उसको छोटा बनता जा रहा है. that means 100 में से अगर 1 लिया, so look at the size of the 1 here, it's very small. but when you go to the thousands place, see, और ये छोटा हो गया, it became more smaller. The value becomes more smaller here. But when you go to the right side, when you go to the left side, what happens? Increases. Value क्या हुआ? Value यहाँ पे बढ़ने लग गया, right? But when you go to the right side, it is becoming smaller and smaller. Okay? So this is the place value chart of decimals. Decimals में क्या हुआ? यहाँ पे देखो, you look at here, normal place value chart पे हम अपने को we have only ones, tens, 100,000, 10,000, lakh and so on in Indian system, and in international system we have millions and all these things. But so that is the place value chart, normal place value chart. But here what happens is we have a decimal point over here, and the decimal to the right side we have 10th, 100th and 1000th, and to the left side we have normal place value chart. To the left side what happens is the value increases, value बढ़ते हैं, और जब right पे जाते हो तो value कम होते जाते हैं. So the more towards the right, the value of the decimal place is very less. That you have to keep in your mind. Okay, so moving forward, now I will tell you what how you call this number. हम इसको कैसे read and write कर सकते हैं. How do you read and write these decimal fractions? How do you read and write this decimal fraction? कैसे read करेंगे हम? I'll show you with an example. Suppose I am having a number. अगर मेरे पास एक नंबर है 36.752. See, I am having a number over here 36.752. तो ये तो आपको familiar है, right? This I think you know, you are very familiar with this 36. Look at this 36. ये ones का place है. This is ones place, and this is tens place, right? So what about after that? अभी अपन ने previous slide पे देखा था कि look at this place. This is called the decimal point. We call this as decimal point. And then what happened to the next part?
नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द डेसिमल पार्ट। बीच में हम डेसिमल को डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, एंड टू दिस पार्ट ऑफ दैट इज कॉल्ड द, this complete section is called the decimal part. See, this one is called the decimal part. So ये जो 36 है, 36 is called as the whole number part. This number is called the whole number part. Whole number part. See, it's 36 is whole number part. Decimal point आ गया, उसके बाद ये decimal part हो गया. So how do you call this? इसको हम कैसे कॉल करेंगे, इसको कैसे रीड करेंगे हम? हाउ डू यू रीड दिस? सी नॉर्मली क्या होता है, अगर ये 36 है तो वी कॉल इट एज 36 36 कॉल करेंगे, देन पॉइंट के बाद क्या बोलेंगे, 36 पॉइंट। इसको एक चीज याद रखना आप लोग, यू जस्ट टेक केयर ऑफ वन थिंग, you will never call this 752 after decimal point। ये decimal point के बाद क्या होगा, उससे पहले हम 36 एक साथ बोलेंगे, but after decimal point we call it as only numbers। क्या बोलेंगे, numbers 7 5 2। see 36 point, see I'll tell you this, we call this as 36.752. Did you get it? So when you read this number, you have to say that 36.752, not 36.752. You cannot say that. The rule is 36.752. After decimal, you take the name of each digit over there, not continuously. Okay. So that's what we learned in this. So let me sum it up. So decimal, it's a Latin word, means decim. It means tenth, that means one part of 10. And then moving forward, we have the place value chart of decimals. In normal place value, you have ones, tens, hundreds and thousand, but here we have the decimal point. Then tenth, hundredth and thousandth, we have this th over there. You have to add th with that. See, t and h, that is added over there. And then we have reading and writing of the decimal fraction. How do you read it? हम कैसे read करेंगे उसको? So if suppose for an example you have 36.752, we will read it as 36.752, right? This is a decimal point, then ones, tens, and here it is. Yeah, one more thing I'll say that, one more thing, let me explain this. See, here the seventh place is 7 is 7 by 10, then this is the 100th place, and this is the 1000th place, right? So keep this in mind. I made it a bit messy, but when you see this video, I think you can read and follow this. So try watching these videos. ये videos आप बार बार देख लो, post करो, इसको read करो, समझो इस चीज़ को, because this decimal part is very important for your maths life. So this decimal part is very important for you in your life. So anyway, in your school life, you have to learn decimal points, and in your life also you need these points. Need this values, decimal points. It's come in a daily life also. तो इसको seriously लो, see these videos often and learn from this. Okay, thank you students. Take care.